and then I start expressing my gratitude towards my life. First of all, I thank my parents for bringing me into this world. Second, I thank my parents for the sacrifices that they have done for bringing me up to this stage in life. The third is I thank my brother who has been supportive throughout my life. The Okay. fourth So hold one, on. There is a change. There is a little bit change. You are doing it really well. Just take the complete sentences. Thank you, thank you, thank you, God. okay, Thank okay. you, universe. Thank you, thank you. Correct, correct. Yes, Thank you, yes. thank you, thank you. Then I thank my wife, Miss Nupur Pal, who is currently in Surat just holidaying. Okay, so I express my sincere gratitude to her for being an excellent companion in my life. And thank you, thank you, thank you, Nupur. And then I express gratitude towards my body because Mhm. I express my gratitude towards my body because that is what allows the soul to live in it, correct? Or to Absolutely. exist. Instead of living, I should use the word exist in it. Hmm. I thank the air I breathe. Thank you, thank you, thank you. I thank the water that I drink. Thank you, thank you, thank you, thank you, universe, for giving me a meal in today afternoon. Okay, I thank I thank the house in which I live for giving me the positivity all around it. Thank you, thank you, thank you. I thank I thank my air conditioner, which keeps me in the best frame of mind, even though the outside weather is pretty hot and humid. Thank you, Right. thank you, thank you. And the last but not the least, I thank my mind for at least having some sort, at least a 0.01% of a spiritual bent that I have. So thank you, thank you, thank you again. I thank you also, Monica ma'am, for giving us this opportunity to align ourselves with the cosmic laws as well as with the universe, because God is there in the universe. The universe is infinite. Similarly, I thank all the participants who are currently listening to me. Thank you, thank you, thank you. My humble gratitude to all of you. Thank you so much, sir. Wonderful, gratitude statements given by you. Amazing. Can we clap for him, please? Yes, amazing. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. We are so blessed that the first time that you have actually, took the initiative to do the gratitude statements. Amazing. Thank you so much. And I would love everybody to take the initiative and do, because that is how we can grow. So this is again a practice, and the practice in front of everybody. Kuch galat nahi, kuch theek nahi, just a practice. Let us do that. Thank you so much for creating such Great work, beautiful Samrat. Great gratitude work. statements. Great work, buddy. Thank you. Thank you. Thank you for All sharing this, with you us. will not Thank you believe, so you will much. not believe, you will not believe. I am closing my eyes and praying. I don't know what came over me right now, and with the kind of with the force or with the vital forces which I just spoke, Wow. so I am feeling very much humbled, and Wow. I thank you all. I thank you all. Even if there is an iota of pride or ego in it, please, I seek forgiveness. Thank you. Thank you, Ned. Thank you. Thank you for Wonderful, sharing. Samratji. Wonderful. Amazing, amazing, Thank amazing. you. Thank you. Thank you for so much for sharing. Thank you. Yeah, great, 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 great. So here we are. I really thank each and every participant over here for participating with their heart. And I promise you that when you are here, we are there to serve you. You are here. We are here to bring abundance in your relationship, abundance in your health, abundance in your work, abundance in your money. But so that is our promise to you. And magic is started already happening in your life. जैसे सम्राट सर ने बोला पता नहीं किसने क्या हुआ, and he started with it, which is so good, amazing. Similarly, the magic will happen in your life also, and you'll be excited to share over here. This is a wonderful platform where you can share anything, whatever comes in your mind, just go ahead with it. You are open to share. So with your gratitude, the common days will become Thanksgiving. Your routine jobs will become the ordinary opportunities and blessings. And this book, it has got lots of exercises, lots of
exercises on gratitude, which will help you in your thinking pattern, which will help you in, you know, manifesting your goals and dreams. That is why we are here for. Great. So yesterday homework was that you have to write down, count your blessings. That is 10 blessings you need to write. And then thank you after each statement. And then magic stone. How many of you have got the magic stone? मैंने कल वो ट्राई किया था। I got it. कल मेरा पूरा का पूरा सर दर्द वगैरह हो रहा था ना, तो मैंने वो हल्दी खाई थी रात को, तो उससे एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल जादू हो गया, जादू कुछ भी नहीं, एकदम फट रहा था, अब तो मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Great. So magic always happens, you know. Magic always happens, you know. Here we have got Harshita also. उसकी sister को हुआ था, and we did, you know, whatever we really wanted to do. Immediately within 2 minutes she was out of the hospital, you know. That was the magic that happened, you know. When you do मेरा भी हेडेक ठीक हो गया, 3 दिन का हैंगओवर। मैं तो चैंप हो गया हूँ अब, जब भी कुछ होता है सबसे पहले यही काम करता हूँ। सबसे पहले तो अनमोल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। तो कल नेक में मेरे भी हो रहा था, पता नहीं कहीं से अकड़न आई होगी, मैंने सिर्फ अपना वो किया ग्रेटिट्यूड एंड इट वाज जस्ट गॉन। मैंने ज्यादा मुझे फोकस भी नहीं करना पड़ा, फटाफट हो गया। Amazing. So these are the results. So I request everybody, you know, once you know the tools, it will be easier for you to live a magical life, you know, and everyday magic is going to happen, you know. Very fast, very easily you can do those things, you know. So I hope everybody got the magic stone with you. Oh, wonderful. Yes, I got it. No, ma'am, I couldn't get it. सम्राट सर, आप तो पहाड़ों में ही बैठे हो, वहां पे तो पत्थर ही पत्थर है। जिन्होंने एक स्टोन सो ओदिला में बात थी, कससे थी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। Who is this? Wait a minute. So this is a series of crystals actually. So I don't know whether this will work or not, but will it do for today? Can you show me? Crystal. Okay. Now you take one stone. One stone, correct? Just simple one stone, which can be. So can you excuse me? I have a lot of right from tourmaline to, you know, red jade to everything. Can you just give me 1 second? Yeah, please go ahead and get it. Yep. हाँ मम्मी सेशन में हो, बाद में बात करती हूँ। Yeah. So all of you have got the stone. Just so yeah, very good, sir. Priya has, Girish has shown, Nupur, Yatish ji ne dikha diya. This I got from the street side, as I showed you that day, ma'am. Wow, beautiful. I called him Rainbow Mountain. Wonderful. I hope you are taking all the precautions. Where do you stay? For quite some time. And your office is in Equinox. But how's the travel? Is it better? I should put everybody on mute as. Yeah, ma'am. I got this. This is a small piece of yellow sapphire. Is it okay? Wow, this is fine. Perfect. That stone will attract you, you know, basically. It will tell you, please take me. I'm your magic stone. You will be attracted to that stone that much. So great. See this? Hi, Monica. Yes, hi. Hi, Kinjal. How are you? I'm good. How are you? Good to see you here. Same here. Great. So yesterday I told everybody to get a magic stone. So everybody is showing the I magic just stone picked up one. Wow, very nice.
Very, very nice. Great. Wonderful. Great. So Thank let us you. start. So the magic stone should be like a small stone, either a marble with smooth surface, any shape, any color, which you feel happy about it. When you hold it, you feel so good and happy. You will get attracted towards it automatically. And remember, every stone has an energy. And when you hold it, it will give you energy. And it will work on your relationships. It is going to work on your health. It is going to work on every area of your life. You know, that is why this magic stone is really, really special. Today we are creating it a magic stone, and till the end, जब तक हमारे सेशंस है, उसके बाद भी लाइफ टाइम तक ये आपका मैजिक स्टोन रहेगा. You can do anything with magic stone. I'll tell you what is to be done with this now. So let us start the chapter. Who is going to read the chapter today? Yes, come on. Priya, would you like to read today? Yes, ma'am, sure. Yes, please. And all of you, please read along with Priya, because each and every word is very, very important. Yes. Thank you for taking the initiative. Thank you for taking it on. Yeah, thank you, please. Thank you for this opportunity for letting me read today. Thank you, thank you, thank you. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. These are the words of Charles Dickens, a writer. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude, and that's exactly what this magical practice is about. Lee Rover presented the gratitude rock practice. Going. One second, hold on. I'll just put on my headphones. Lee Broad presented the gratitude rock practice in the Secret Film and book when he told us the story of the father of dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or a stone already that you can use as a magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you're grateful for. Then say the magic words, "Thank you for the best thing that happened." Return the magic rock to its place by your bed. And that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep,
Think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened, and in the process of searching and then deciding on the best one, you're actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they will change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Yeah. Magic practice number 2, the magic rock. First step. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1, that is count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Step 2. Find a magic rock and put it by your bedside. Step 3. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Step 4. Say the magic words, thank you, for the best thing that happened today. Step 5. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Step 6. Read tomorrow's magical practice today. Thank you for giving me this opportunity to read. Thank you, Priya. Thank you so much for creating such wonderful chapter. Thank you. Thank you. Such an important chapter this is, you know. And vitamin G you have to take every day, no matter what. The moment you get up in the morning, you open your lotus flower. With the lotus flower, with 10 petals, you say gratitude to 10 things at least. And that you take a dose every morning may cause shifts in the perspective, may cause feeling of abundance, and it may decrease your feelings and fear and anxiety. may नहीं, definitely decrease कर देगा ये. जब आप जितना gratitude show करोगे, it will be multiplied every day. Now remember very important thing. Every day may not be good, but there is something good in every day. Yes, who's this? Somebody wants to say something? So you can talk afterwards. Once I finish it off, you can, in between, then you can say, right? So every day may not be good. There is something good in every day. कुछ तो अच्छा होगा ना उस दिन, उसको ध्यान रखना है. तो जब आप रात को लेटोगे, तो आपने मैजिक स्टोन को अपने हाथ में रखना है, and you will scan the whole day कि आज सबसे अच्छा मोमेंट क्या हुआ है. Now all of you think आज सबसे अच्छा मोमेंट क्या हुआ है. सोच के देखो जरा पूरे दिन में सबसे अच्छा मोमेंट. मॉर्निंग में आप उठे, आपने क्या किया, फिर ब्रेकफास्ट हुआ. कुड भी अच्छा ब्रेकफास्ट था, वो आपको बहुत अच्छा लगा. कुड भी किसी का फोन आया, आपको बहुत अच्छा लगा. व्हेन यू वर एट द हाईएस्ट वाइब्रेशनल लेवल, व्हेन यू वर एक्साइटेड, यू वर हैप्पी, यू वर डूइंग सो मेनी थिंग्स, यू नो. पूरे दिन में अभी तक क्या हाईएस्ट, यू नो, वाइब्रेशनल स्टेट का मोमेंट था.
Who's going to share? I want 2 volunteers. Ma'am, let me share. Yes, please. अच्छा, सबसे पहले तो आपको मेरी शक्ल देखिए, मेरे लैपटॉप ऑन कर लिया। हाँ, तो सबसे पहले तो ये हुआ, अच्छा तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हुई। मैंने सबसे पहले आज चिड़िया को दाने खिलाए थे सुबह सुबह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आज मैंने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया आज मैंने अपने अकाउंट के अंदर। मैंने काफी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, तो वो मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट था। Okay. और one moment. Tell me one moment so that we can give opportunity to others also. ओके, वन मोमेंट। ओके, तो एक न्यू स्टूडेंट ने भी एनरोलमेंट किया है, तो बहुत सारे मोमेंट थे, तो मैंने बता दिया है, ये चीज अच्छी है। हाँ, वेरी नाइस। स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स वगैरह हो रहा है, सो दिस इज गुड। Wonderful. Thank you so much for sharing. Great. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Sujata. Amazing. So now, why are we using this magic stones? You know, when early morning, we are doing gratitude, the lotus, we are doing 10 gratitudes. When we are starting the day, the whole day is set with gratitude, right? We are setting the tone of the whole day. So that is through the gratitude. और पूरा दिन हम थैंक यू करते जा रहे हैं, जो पूरा दिन तो सेट है, फिर रात को क्या जरूरत है स्टोन की? You know, when we sleep, we are sleeping, but our subconscious mind is awake. So while sleeping, when you put your stone in your hand and you show gratitude to that moment, that means which is at the highest vibrational level in subconscious mind, that is there, you know. तो आप सोते भी gratitude mode में हो, जब आप रात को भी gratitude mode में हो, सुबह उठते भी gratitude mode में हो, so this is a complete cycle. रात को सोए gratitude mode में, मॉर्निंग में उठे, आपने लोटस किया, gratitude किया, अगेन रात को गए, so the whole day night is completely protected with that gratitude. So imagine we are protecting you all the time, so you are protected. So that is why the magic is going to happen in your life all the time. So just remember to be in the high vibrational state. So that is why the magic stone, here comes the, you know, how we proceed with the magic stone. So before you sleep, hold the magic rock. अब आपने आज अपने मैजिक स्टोन को एनर्जाइज करना है। बताओ एनर्जाइज कैसे करना है? आपने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालना है, एक छोटी सी मुट्ठी निकाल के नमक डालना है, और उस स्टोन को अच्छे से धोना है, उसको अच्छे से रब करके धोना है, और रनिंग वाटर में धो के देन यू कीप इट एट योर बेड साइड, और बेड के साथ में रखना है। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 1 वीक जब आप उसको रोज अपने हाथ से उठाओगे, उसको थैंक यू करोगे, उसको किस करना है, थैंक यू करना है, दैट इज योर लकी चार्म। उसको हाथ लगाओगे, कोई डील हो, कोई दर्द हो, कोई पेन हो, कुछ भी हो, आप जस्ट पुट इट ओवर देयर, इट विल बी गॉन। ट्रस्ट मी, इट विल बी गॉन। आपकी कोई सिचुएशन काम नहीं कर रही हो, कहीं इंटरव्यू पे जाना है, कोई बिजनेस, इसको रोज धोना नहीं, रोज नहीं धोना, सिर्फ आज फर्स्ट टाइम धोना है, दैट्स इट। उसके बाद आप वहीं रख दोगे बेड के साइड, क्योंकि अभी आप कहीं से उठा के लाए हो, उसके अंदर उसकी एनर्जी भी है जहां से आप लाए हो उसको, राइट? So we want to remove that energy, we want to put our energy, right? So first day, आज आप उसको नमक वाले पानी से अच्छे से धोएंगे, उसको पहुंच के अपने बेड साइड पे रख देंगे, उसको गिरने नहीं देना है, एक रिस्पेक्ट देनी है, because that is going to be your lucky charm and that is going to be with you when you are having a wonderful time, you know. कोई इवेंट हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई काम हो, कोई मीटिंग हो, कोई ट्रेडिंग हो, anything, it will be lucky for you. बिजनेस डील हो रही हो, अपने हाथ में रखो। आपको कभी किसी के सामने कोई बात रखनी है, कभी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इतना इसके अंदर ताकत होगी। आप बिलीव करोगे तो होगी, बिलीव नहीं करोगे तो नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू। बट इट विल बी एनर्जाइज्ड, at least within 10 days it will be energized, it will be having that power. Yes, I know. You can create that power, nobody else. वो किसी और का स्टोन नहीं है, आपका है। अगर आप अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, हर एक को अपना अपना स्टोन लेने दो, बिकॉज आपकी एनर्जी आपकी है, उनकी एनर्जी उनकी है, राइट? So this is what it is.
So hold the magic stone into your hand, close your fingers tightly and imagine, मतलब एक तरह की ये छोटी सी मेडिटेशन है कि आप पूरे दिन को स्कैन कर रहे हो, क्या सबसे अच्छा हुआ आज मेरे साथ. इट कुड बी ये भी है कि आज सबसे अच्छा हो रहा है कि मेरा ये मैजिक सेशन हो रहा है, ये सबसे अच्छा हो रहा है. So just say that magic, I was in the magic session and it was amazing. Thank you God, thank you universe, and you, the statements that you have to say is thank you God, thank you universe for giving me this opportunity to live that moment. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. Put it on your heart and say I love you, I love you, I love you. और 2 मिनट उसी मोमेंट को जीना है आपने, जो मोमेंट आपने जिया है. It will be energized, your stone will be energized. तो सोने से पहले, उसके बाद कोई मोबाइल नहीं देखोगे. ये लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए सोने से पहले की. इसके बाद आप फोन दोबारा नहीं देखोगे. You will just sleep because इस ग्रैटिट्यूड के साथ आप सो रहे हो, इस मोमेंट के साथ आप सो रहे हो. ठीक है. Sometimes it happens, you know, मैं करते करते सो जाती हूँ, स्टोन मेरे हाथ में रहता है. That is also very good. That is also very lucky. You have the power to create anything. So we are, the first step of creating power is magic stone. Right? So this is what you're going to create. So you will show the gratitude in the morning. You are going to show the gratitude in the evening. Show intense love to magic stone. Kiss it and love it. Because your vibrational level has to be higher when you are holding that magic stone. Right? Great. So, अब आज का दिन देखो. आपने करा. Now put your magic stone in your hand and say God को thank you. बोलो thank you God, thank you so much for creating that beautiful moment for me. Just think and say that. अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप समझ लो मुट्ठी में वो है और वो मैजिक मोमेंट को थैंक यू कर दो आप कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दैट मैजिकल मोमेंट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. प्लीज डू इट, all of you do that. Thank you God, thank you universe for creating that moment for me. I'm so happy. Thank you, thank you, thank you. Right? So, magical things. Monica, I have a question. Yes. I needed to ask whether मेरे magic stone तो पहले से चल रहा है, तो हमें इसे भी धोना है, तो आज धोना है इसको दोबारा? नहीं, it is already. जिनके पास already है वो कुछ नहीं धोएंगे. Okay. It is already energized. You will not clean it. मैम पर पहले धोया नहीं था. सेम है, मैंने भी नहीं धोया. आपकी इच्छा है तो धो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That's okay. See, usually मैं अब आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यूजुअली क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी. जब पूर्णमासी होती है, दैट इज फुल मून डे होता है, एंड यूनिवर्स हैज सो मच ऑफ पावर. अब हम फुल मून पे जब भी गएंगे, मैं कहूंगी मैजिक स्टोन को बाहर रख दो चांद के नीचे. उसके अंदर जो पावर आएगी ना, दैट इज मैजिकल. उस दिन खीर भी रखते हैं चांद के नीचे. हाँ, यस. खीर रखो, पानी रखो, स्टोन रखो, दैट गेट एनर्जाइज्ड, 100% एनर्जाइज्ड. अगर पानी रखोगे, पानी की बोतल वो भी पियोगे, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, वो आपका काम 100% सक्सेसफुल होगा. So there are few things we will be talking later on also. So just अगर आप क्लींस करना चाहते हो, you can clean it, because stone आप कहाँ से लेके आए हो, कहाँ की एनर्जी है, we don't want that energy to come into our house. It has to be cleansed. तो उसको नमक वाले पानी से क्लीन कर सकते हो. Okay, Anmol, don't rinse it with salt water. You can वो जो आपकी अगरबत्ती आती है, धूप आती है, उसको जगा लेना और धूप के अंदर जो उसका धुआं होता है ना, उसके अंदर उसको रोल कर देना, तो वो फिर से क्लींस हो जाएगा. नहीं, मैंने कुछ और ही सोचा था. मैं 2 चौकोर ऐसे क्लीन कर दूंगा बस. मैं इसकी एनर्जी को खराब नहीं करना चाहता. नहीं, रहने दो, छोड़ दो.
तो उसमें फिर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, इट इज ऑलरेडी Ma'am, actually, या हर्षिता बेटा? ma'am, when I bought the stone, I picked it up from the ground. So after washing, I didn't wash it so clearly because I didn't wanted the earth essence to go out of the stone. So what should I do now? Should I wash it or? हाँ, क्लीन कर दो, इतना व्यायाम करने की जरूरत नहीं है. देखो, क्लीनिंग इज गुड, इट इज गुड, ताकि आगे जब भी आप उसको पकड़ोगे उसको डबल एनर्जाइज हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. इफ यू वांट टू क्लीन इट, देखो पहली बात तो जिसके मन में आया है वो क्लीन कर दे, जिसके मन में नहीं आया वो मत करे. इट इज ऑल द इंटेंशन दैट मैटर्स. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Okay, ma'am. So, thank you. Okay. And besides, ma'am, as you say, the stone itself will kind of tell you. It has its own energy. Yeah, absolutely. और आप जब आपने स्टोन उठाया है ना, कुछ सोच के उठाया है, उसको देख के आपको बहुत खुशी मिली है, आप उसको हाथ पकड़ोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा. You will get attracted towards it. Yeah, Priya. Yeah. Yes, as I was saying, the stones themselves have their own energies, and they will, and the stones will talk to you, and they will tell you, whether you have to give them a bath or not. So that's how it is. Thank you, Priya, for sharing that. सबको ये बात नहीं पता चलेगी, लेकिन जिसको लगेगा वो धो लेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं धोएगा. Thank you. So, showing gratitude in the morning creates the tone of the day. Showing gratitude at night, at the end, while sleep, you show gratitude through the stone. That is again creating your subconscious mind. Okay, so let me show you the video. And before that, I would just like to share one small thing which happened today. Yeah, please. See, when we go to the town is around 4 kilometers away from here, and we have to depend on the bus to take us there because we don't have a vehicle of our own. So when we go to the town, finish our work, and when we come back, we are really dead tired. And today, with the grace of God, with the power of the universe, and of course with the power of gratitude, all of us are so energetic and fresh. It's all thanks to gratitude, and it's all thanks to the techniques and the strategies that you have given us. Yes. Yes. So I wanted to share this with you. Thank you so much. Great for sharing this. Great. So let me show you the video, beautiful video, and please listen to it carefully, and it will answer all your questions. Whatever is happening in your mind, it will answer everything. Just watch it. All of you can see this video? Yeah. Okay.
was it? Amazing, beautiful, Monica. मतलब आज Out मैंने of देखा the हुआ है, box. but it is so, आज इतना अच्छा लग रहा था ना ये पढ़ने में, क्या बताऊँ मैं, मतलब amazing है, super. It gives This you is one all of the my answers. favorite videos. हर बार अलग मीनिंग देता है. Actually, ब्यूटीफुल वही बात. ब्यूटीफुल. क्या पता पिछली बार ध्यान से देखा ना हो हमने. इस बार अलग ही डेप्थ समझ में आ रही थी. Yes, because every time you're raising yourself to higher, higher and higher, you know. आप जितनी बार भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी देखोगे, हर बार there will be something new insight that you're going to get. So whenever you watch different videos, you know, you get different insight. आप एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, but every time you will be seeing in a different perspective, you know. So life is beautiful. And in this magic session, we are going to teach you all the different techniques to make your life beautiful. Just apply in your life and see the magic happening in your life. Just stop. पहला काम सबसे पहले stop complaining. Stop complaining about your children. Stop complaining about your boss. Stop complaining about your work. Stop complaining about your house. Stop complaining about the things you have, you are dealing with. Just stop complaining and start giving gratitude to whatever you have got. Just say thank you, thank you, thank you, God. जो भी situation है, just start giving thank you. Once you start complaining, आपका gratitude का जो घड़ा है ना, वो खाली हो जाता है. I told you, अभी आगे भी सेशन में आएगा, एक कंप्लेंट 10 ग्रैटिट्यूड को किल करती है. So please stop complaining. And अपने बच्चे, आपके इतने प्यारे बच्चे हैं, stop complaining about your kids. ये नहीं करता, वो नहीं करता. It is up to us how to bring our children up. उनको पिटाई करके, उनको करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. When you start praying for your child, my child is a genius. You know, एक 3 साल का बच्चा स्कूल से आता है एंड हाथ में लेटर लेके अपनी मम्मी को पकड़ाता है लेटर की, मम्मा ये लेटर मुझे स्कूल से मिला है. तो उसकी मदर उसका लेटर देखती है और वो देखती है, वो शॉक्ड रह जाती है. तो बच्चा मम्मी की शक्ल देख रहा होता है कि इसमें क्या लिखा है मम्मा, मुझे बताओ तो सही. तो उसकी मम्मी कहती है, स्कूल से लेटर आया है कि आपका चाइल्ड एक जीनियस है, और जो जीनियस बच्चों के लिए हमारे स्कूल में कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो आपके बच्चे को स्कूल आने की जरूरत नहीं है. एंड दैट चाइल्ड केम टू बी द जीनियस. वो कोई और नहीं था, थॉमस एडिसन था. उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था कि उसका जो दिमाग है ना, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, वो ऐसे बच्चों को हम स्कूल में नहीं रखते हैं. बट उसकी मदर को मालूम था कि मेरा बच्चा जीनियस है. And when that mother started saying, you are a genius, that is why you are not going to the school, but I will teach you. The mother took the initiative to teaching her own child, and he became such a wonderful scientist. तो अगर हम रोज अपने बच्चे को बोलते रहेंगे, तू नकारा है, तू बेकार है, तू डफर है, तेरे को अकल नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो हमारे बच्चे वो ही बनेंगे. Please call your children genius, call your children a wonderful child, call your child a champion, call your child a super person, you some wonder boy. आप अगर जब ये adjectives अपने बच्चों के लिए यूज करोगे ना, your child will be extraordinary. चाहे वो आपका 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो आपका 12 साल का बच्चा हो, चाहे वो आपका 25 साल का बच्चा हो, चाहे आपका बड़ा से बड़ा ही बच्चा क्यों ना हो. But the only thing is, when you give respect, you get respect. So always remember, no complaints from today onwards, please. Only gratitude. आपने किसी के behavior में change आना है, show gratitude. We are all divine beings. We are here to respect each other. We are not here to criticize each other. आपकी जिंदगी में उस दिन से टर्न अराउंड शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपने कंप्लेंट मोड खत्म कर दिया अपनी लाइफ में. So this is what it is. Okay, so let us move ahead. Here again, I'd like to share one small incident which happened today. Okay. State Bank of India, you know, like we've had real terrible experiences. Okay, but today I went to the bank and, you know, like
I wanted to transfer some money to one of our close people. Like मेरा मुंह बोला भाई है वो. So we had to like send money. So I tried, like giving the I tried transferring the account from the ATM card. लेकिन वो हुआ नहीं. So then I went inside and luckily there was no one for giving this thing, for giving the sanitizer or checking the temperature, because that is one thing which I don't like to do. So there was no one there. I said, oh, thank you God for that. I went inside and the people today was so helpful and so kind. It's all to the power of gratitude. And so after the transaction got over, I thanked each and every one for the smooth transaction. And I kept thanking everyone. I kept thanking God and universe for the job to be done successfully today. Wonderful, Priya. This is how you can every day, whatever you are doing, if you show gratitude in every task, you see the magic happening everywhere, wherever you go. And bank se niकलते वक्त, I saw the thing on the board, the one which I shared in the group. Yes. Thank you so much for sharing. So what we have to do is we have to raise ourselves to that level, to the level of love, to the level of gratitude, joy, passion, happiness, excitement, joyful, hope and satisfaction. अपनी वाइब्रेशनल लेवल अगर आपके यहाँ पे है, आप बैंक जाओगे, बैंक में काम होगा, आपका ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में काम होगा, आप कहीं भी मीटिंग के लिए जाओगे, आपका काइम टॉप पे होगा. अगर आप कहोगे आज मैं बोर हो रहा हूँ, आज मेरा मूड नहीं कर रहा, आज मैं ब्लेम कर रही हूँ किसी को, ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने नहीं कराया. नहीं, वो काम इसलिए नहीं हुआ कि आपने उसको ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया. आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर पा रहे हो. आप अंदर गिल्ट है क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया. आपको वरी है बिकॉज आपने ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया. आपको डर है बिकॉज आपने ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया. जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो ये सारी चीजें वैसे ही खत्म हो जाएंगी. And you are at the higher vibrational level. That is the good feeling, and keep it up. That is what you need to do. And when you are doing gratitude morning and gratitude evening, what is happening? Intensifying the magnetic force of your gratitude. आपके मैग्नेटिक जो ग्रैटिट्यूड का मैग्नेटिक फोर्स है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा और मैग्नेटाइज हो जाएगा जो भी आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में. ड्रीम्स और ये तो बहुत छोटी सी बात है. आपके रेगुलर रूटीन में व्हेन यू आर शोइंग दैट ग्रैटिट्यूड, वो मैग्नेट बन जाएगा और मैग्नेट बन के आपको हर चीज अट्रैक्ट करता जाएगा और स्मूथली द थिंग्स विल बी हैपनिंग. आप ये हो क्या रहा है यार, इतना शांत कैसे होगी जिंदगी का, कच 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 कच, ये कर वो कर, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव गॉट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट. क्योंकि जब तक जिंदगी में मसाला नहीं मिलता ना, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, हाँ वो तो ऐसे, क्योंकि जब तक ये मसाला नहीं मिलता ना हमारे को, हमारा मजा नहीं आता पूरे दिन में. प्रॉब्लम ये है. Ma'am, I'm sharing it. Ma'am, I want to share something, Monica. Yes, one by one. Yeah, Kamal wants to share and 2 minutes because it is 6:34. I want to wind up at 4:55. Yes, Kamal. Kamal, come on. Buddy, come on. Kamal and Anmol, come on. Come on, Kamal. Come on, you can do it, Kamal. Come on. मैम मैं भी हूँ. Speak up. Yeah. हेलो. Who's this? मैम वरिंदर, मैं भी हूँ. हाँ बेटे बोलो. करना कुछ. हाँ बोलो. मैम आई वेंट टू सम प्लेस टुडे, मतलब कि लाजपत नगर तक गया था मालवीय नगर से. सो इट इज नॉट अ वेरी बिग डिस्टेंस. मतलब कि आई सॉ एटलीस्ट 6 to 7 cars with 777 number exactly. And it was totally amazing. और जब मैंने भी मैसेज डाला ग्रुप में, मेरी जो मीटिंग थी जिससे मिलना था, इवन दैट वेंट वेरी वेल, वेरी स्मूथली. मुझे लग रहा था कि ही विल चार्ज मी मोर, बट ही सेड कि कोई टेंशन नहीं, आप काम करो, मैं देख लूंगा जो भी होगा, आप टेंशन मत लो, आपसे क्या चार्ज करूंगा ज्यादा. तो आई हैड टू मीट सम ज्वेलर फॉर सम ज्वेलरी. तो उसके लिए भी उन्होंने ही एग्रीड वेरी रेडिली. जैसे कोई नॉर्मली कोई फोटोग्राफ्स खींच नहीं देता, उसने अपने फोन से मुझे अपनी फोटोग्राफ सेंड करी है सारी. एंड लेटर ऑन मैंने जब ये पोस्ट डाला
तो I was moving out and I was like यार आज तो कुछ कमाल हो रहा है and I saw at least 222 की नंबर कार्स ही 3 से 4 after posting that message. Okay. And I was like कि आज तो कमाल हो गया, आज एक बार और मिल जाए तो आज तो पक्की बात है, दिल खुश हो जाएगा. And I was already very feeling very humble, awestruck यार ये हो क्या गया दिल्ली में, और 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आप बार बार जो भी नंबर देखो 222, 777, 222, 777, तो that is very rarest of the rare thing. तो and later on अभी मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था while entering the class, मैंने एक और गाड़ी देखी 47 वाली और एक और गाड़ी देखी 777 just in a span of 2 seconds. मैंने कहा मान गया, आज तो मान गया भाई. Universe is telling me something कि you are on the right path. Great is going to happen. Great. Yes. Wonderful. Thank you so much for sharing. Yes. Thank you. Anmol, come on. So Monica, I wanted to share something. मतलब बाकी तो I keep sharing a lot about how it is impacting. There's a lot been impact. I mean, of course, वो तो हो ही रहा है लोगों का, चीजों का, जो मैं बताया था. But what I want to share today is something more intense. Which I was not even present to was कि मैं कई बार ना बहुत सारी चीजों पे irritate हो जाता था, या you should say यार मुझसे पीछे पड़ गया यार, ये एक irritation आ जाता है, या मेरे से जैसे कई बार भूख बर्दाश्त नहीं होती थी. अभी एक दिन पहले पुरानी बात है, अब भूख लग रही है यार, नहीं बना, अब यार लेट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा मुझे चढ़ जाता था यार. मैंने पहले क्योंकि मैं बोल के गया था कि ये करके रखना, या नहीं बोला तो बात नहीं. तो कहीं जगह पे ना वो गैप, जैसे एक्सपेक्टेशंस का हो या किसी को आप बोल देते हो यार ऐसे काम करना, वो नहीं करता है तो गुस्सा चढ़ता है, थोड़ा इरिटेशन आता है. गुस्सा तो नहीं, इरिटेशन थोड़ा ज्यादा चढ़ता था मेरे को. अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिन से, अरे नहीं किया किसी ने, कोई बात नहीं यार, मैं वहां बैठ के मैंने ठीक है यार मैं मैनेज कर लूंगा. अच्छा अभी कैसे करूं, मतलब बड़े प्यार से बात करो, अभी कैसे कर दोगे, अभी कैसे इसको कर सकते हैं ये बताओ यार, जल्दी जल्दी कर दो यार इसको. मतलब my way of I'm present to that. My way of speaking has altered. And I'm not getting angry at people, I'm not getting irritated by their actions. In fact, I'm ठीक है यार, हो गया तो हो गया, कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ ना, because I'm like यार अब इसको कैसे कर सकते हैं ये बताओ यार, अभी इसको जल्दी जल्दी कैसे, अब जो है सो है, मतलब I'm accepting it, not complaining about it, and then conveying whatever I have to convey and getting it done. Wonderful. I'm not spending any time in that, impact zone and irritation zone, which is a beautiful thing. These are small things, but they are making difference in your life. Amazing. So you are at the higher vibrational level where there is no place for complaint, no place for fear, no place for other things. Great. Very good, Anmol. Thank you. Kamal, you want to Monica, I need to say something. Yes, please. Monica, I need to share something. This is Sarita here. Yeah, Sarita. Yeah, actually, जो आपने वीडियो दिखाया ना, it's really amazing, and that video make my day. Wow. Thank you so much for this video, and I must to say, like law of attraction is always work for me, always. 2-3 महीने without effortlessly, पता नहीं क्या होता है, no idea, energy इतना अच्छा वर्क करती है, always positive people रहते हैं, काम tremendous चलता है. लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर से एक डाउनफॉल आता है. मैंने क्या किया उसके लिए मुझे आइडिया नहीं है आज तक, कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों अट्रैक्ट हुआ है, मैंने क्या किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने कभी एनालाइज नहीं किया. फिर डाउनफॉल आता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, फिर अप आता है. ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, आज तक मेरे को समझ नहीं आया कि ये है क्या. मैंने अफर्मेशन जरूर किया है, विजुअलाइजेशन भी किया है, बट ग्रेटिट्यूड मैंने आज तक नहीं किया था. ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट थिंग एंड वेरी न्यू थिंग फॉर मी. Yes. So when you start using it, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा. Thank you. I hope so, because ये point मेरे लिए most important You है. hope so. I am 100% sure. You are hoping. I am 100% telling you कि this is the fact. Thank you, Monica. Yes, Kamal, you want to share something? Then we have to go ahead. It's 6:39. There are 2 sharings. I'll just finish with one if you want. When I used to do this gratitude, we have this group of lawyers where one of the lawyers was one of the lawyers. We have this group of lawyers in our court, and one of the lawyers was always so rude with me. And in my gratitude statements, I used to always say that you say thank you and forgive you, I love you, and this and that. Now we were holding this meeting on Zoom, and it is going on right now also. It's just started now. So that was supposed to start at 5:30. So I told on the group, I posted on the group, I have some other commitments, so I cannot join. Ma'am, this person जो मेरे against हमेशा था, he said Kamal नहीं है तो we'll start at 6:30.
Wow. This is the guy, and he is sharing me positive affirmation messages जो डालते ना सुबह सुबह, that he's putting. So this is a very big thing. And the meeting is still on right now. It's just started at 6:30, so I'm attending 2 meetings. Wonderful. One more positive thing about is that out of the many things which I do, I was a 2nd degree black belt long time ago. Okay. And I always had this passion to do it, to continue it. I got connected with my sensei, and he said, just you fill up a registration form and let's start it. Are you fit? I said, yes, I'm fit, and I can do this thing. Today at 5:10 o'clock, I attended the Zoom teachings, where he was teaching yellow belt students. There were at least 30 students online. Okay. He introduced me as your new senior instructor. Oh, wow. And see, I had no vision that this would come to me. And then I know very sure within months my passive income would be starting. Wonderful. Because he has made it sure that, yes, boss, you have to start going to this. And it is on. So at this moment, I'm getting 3 Zoom meets. I just finished with the karate. I am doing this. I am again with the advocate meet. I'm having time for everything, but I'm still so busy. Wow. So, Congratulations, भैया. Thank you. Thank you so much. भाई बच के रहना पड़ेगा, डर के रहना पड़ेगा, तो तरह से ठोक दिया तो बचेंगे नहीं. नहीं. Thank you so much. Thank you so much all. Thank But you so much. awesome, buddy. Awesome. That's really wonderful, Kamalji. Congratulations. Great. Thank you so much all. Thank you so much all. Wonderful, Kamal. You are creating miracles in your life. Superb sharing. Superb sharing. Absolutely. Best sharing of the day. Great. So today's assignment is, again, write 10 blessings. मैजिक रॉक रिचुअल करना है. रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन को आपने क्लीन करना है. क्लीन करके वाइप करके सोने से पहले उसको मुट्ठी में रखना है. बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे आपने उसको थैंक यू करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल की क्लास के लिए आपने 3 रिलेशनशिप चूज करने हैं, क्योंकि कल क्लास है रिलेशनशिप के लिए. 3 रिलेशनशिप ऐसे चूज करने हैं जो आप ठीक करना चाहते हैं, जो आप चाहते हो कि अब इसके बाद मतलब उनके साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये मत कहना छोड़ना मेरे को नहीं करना है, नहीं. इफ यू वांट टू फ्लाई, आई एम टेलिंग यू, मैं दोबारा से बोल रही हूं, अगर आप आसमान में ईगल की तरह उड़ना चाहते हो, ऊंचाइयों पे सपनों को साकार करना चाहते हो, वो जीना चाहते हो जो कि आप सपनों में देखते हो, वो सपने सच करना चाहते हो, तो आपको अपने रिलेशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा. कंप्लीट का मतलब है कि कोई ग्रज नहीं, कोई कुछ नहीं. यू हैव टू एक्चुअली बी वन विद देम. सो प्लीज 3 रिलेशनशिप्स, उनकी फोटोग्राफ्स अपने फोन में हो, अगर आपके पेपर पे है वो मिल जाए, प्रिंट आउट मिल जाए, जो मर्जी मिले वो आप कल लेके आओगे क्लास में. एंड हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट मैजिक इन रिलेशनशिप्स. एंड मोस्ट ऑफ ऑल, अगर सबसे पहली बात, अगर आपके पेरेंट्स के साथ इनकम्प्लीशन है, इनकम्प्लीशन का मतलब है पेरेंट्स के साथ कंप्लेंट रहती है, वो हमारे को अप्रिशिएट नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो प्लीज सबसे पहले पेरेंट्स के लिए करेंगे. तो वन ऑफ द रिलेशनशिप यू हैव टू कीप एज योर मदर और योर फादर और बोथ ऑफ देम व्हाटएवर, बट 3 रिलेशनशिप कल आप चूज करके लाओगे. अब इस रिलेशनशिप के चक्कर में मैजिक स्टोन मत भूल जाना, वो करना बहुत जरूरी है. सो 3 रिलेशनशिप की फोटोग्राफ्स मोबाइल पे हो, कैसे भी हो, यू विल ब्रिंग इन द क्लास. राइट? Wonderful. Thank you so much. It was amazing being with you. Anybody has anything to ask? I've got 2 minutes. You can ask. Ma'am, Amit. Yes, Amit. Ma'am, my relations are very good with each and everyone. So, what should I do? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है. फिर और उसको enhance कैसे कर सकते हो वो देख लो. Oh, all right. Sure. Thank you. Ma'am, I have a doubt. Yes, sir. Sanjay here. Ma'am, I want to know, I couldn't get a stone because मुझे लगा stone आ जाएगा. I never knew कि मुझे बाहर जाके पिकअप कर सकता हूँ. But before we started, मुझे ये ring वाला stone मिला. This is a ring which has become black.
I don't know. नहीं सर, ये वाला नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर स्टोन। हाँ, buy or collect from somewhere, right? हाँ जी, हाँ जी। आप बाहर भी निकलोगे ना, कहीं भी कहीं स्टोन मिल जाएगा सर, आपको थोड़ा सा ढूंढोगे मिल जाएगा। Okay, okay, okay. Thank you. Ma'am, I have doubt, ma'am. Oh, ma'am. Thank you, thank you, Hello, ma'am. thank you. Amazing session. Hello. Thanks for being here. हाँ जी, कौन कौन Thank है? you, thank you, thank you, thank you, ma'am. Harshita here. हाँ हर्षिता Thank you बेटा so बोलो। much, ma'am. Ma'am, Thank these you, days thank you, I'm not everybody. Thank you, ma'am. able to Thanks, make more time to study. So I want to write gratitude statements to make some time to study, ma'am. तो I want to know how I should write gratitude you can send statements. me a message, I'll let you know. ये अभी क्लास हमारी स्टोन की चल रही है, Okay. इसलिए करेंगे। आप मेरे को पर्सनल मैसेज देना। गिरीश सर, यस सर। Yeah, I wanted to ask you whether the gratitude can be repeated. Yes. Okay. Yes. Because I told you. there are, yeah. सर कोशिश करो नहीं, लेकिन 3-4 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे मैं पेरेंट्स के लिए करती हूँ, एयर के लिए करती हूँ, तो इट कैन बी रिपीटेड, नॉट अ प्रॉब्लम दैट। Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you Okay, so much. I'd like to share one small song. It's a very small song. जाते सॉन्ग सुन सकते हैं। हाँ. So it's a classical song, and it's connected to the little miracles, little gratitude that come our way. So here it goes. बूंद बूंद चतनकार, बूंद बूंद चतनकार, बूंद बूंद चतनकार, बूंद 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 बनत परम सुख सागर. So basically, the little miracles, the little gratitude that you collect, it'll become a huge ocean of blessings in your life. Yes. And a huge ocean of wonderful things in your life. So I wanted to share this with you people. Thank you, Priya. Thank you for such a wonderful closure. Thank you, everyone. Thank you. Thank so you. much for being here. Thank you, ma'am. Thank you. Have a nice magical evening. You can Have a nice invite your magical friends evening. over here in the session. Thank you, ma'am. Thank you for everyone. And please do your assignment and submit. जो group में link दिया गया है, उसमें अपने assignments complete करके भी submit करा। Thank you. Bye bye. Love you all. Thank you. Bye bye. Take care. Have a nice magical evening. Take care. Love you.